Namaskar, Adab, Shat Sri Akal. Welcome to our YouTube channel and yes, this is the 45th lecture. जी हाँ, यह 45th lecture है इस lecture series का. Okay, and today we are going to start a new chapter. Yes. We are going to discuss infinite series in real analysis. जी हाँ. Up till now in this course we had already discussed what? अब तक हमने क्या डिस्कस किया है इस कोर्स में? We have already discussed about point set topology, functions and its properties, thereafter countability, है ना? All those things have been discussed in detail with all the previous year questions already, है ना? सारे previous year questions के साथ हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. In the previous lecture we had discussed the questions asked in TIFR. Okay, and this evening is dedicated for series in real analysis. Overall this is 45th lecture in this real analysis lecture series, but this is the very first lecture in infinite series, है ना? Infinite series का यह पहला lecture है. I would like to welcome रोहित कुमार पांडे जी, रवि रंजन जी, अमन शुक्ला जी, नीतू कुमारी, प्रशांत जी and शिल्पी साहू. So you all are welcome over here. आप सबका हार्दिक स्वागत यहाँ पर. In between I can see Sonam Chauhan is also there. So Sonam, you are also welcome. Okay, so you all are welcome over here. And this evening is dedicated for series in real analysis. So you people cannot forget that when you are given a function from n to reals that were called as a sequence, but if the terms of the sequence will be added, then it becomes series. Yes. So the new story lead us to say that if you have a sequence an, अगर आपके पास एक sequence है an, be a sequence of real numbers, be a sequence of real numbers. ठीक है, an क्या है? Sequence है किसका? तो real numbers का. Then an expression of the form, then an expression, तब एक expression क्या है? ये sum ही है. एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म. और किस तरीके का एक्सप्रेशन? जी हाँ, इनफाइनाइट सीरीज की बात करेंगे. समेशन n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी an इज कॉल्ड अ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स. ओके, एवरीबडी नोज दिस थिंग्स, है ना? वी ऑल नो अबाउट सीरीज फ्रॉम आवर 11th क्लास, 11th 12th, राइट? सीरीज के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन एट दिस लेवल वी आर इंटरेस्टेड इन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. आई मीन टू से वी विल डील विथ इनफाइनाइट सीरीज. व्हेन शैल वी से अ सीरीज इज कन्वर्जेंट? व्हेन शैल वी से द सीरीज इज डाइवर्जेंट? है ना? कब कन्वर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा, ये देखने वाली बात होगी. और जानते हैं कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के लिए जो रूल है ना, वो एक के बाद एक रूल है. ठीक है, टुडे वी विल बी गोइंग थ्रू विथ टेलीस्कोपिंग सीरीज. आज हम लोग टेलीस्कोपिंग सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या होता है? अब देखिए, जो टेलीस्कोप होता है उसमें क्या होता है? फोल्डिंग्स होते हैं. ठीक है, यू कैन स्ट्रेच दैट एंड यू कैन श्रिंक दैट, है ना? तो उसी तरीके से सीरीज को भी हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे देखेंगे कि जो टेलीस्कोप हम लोग यूज करते हैं कुछ उसी तरीके का काम होगा, है ना? श्रिंक होके सिर्फ कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में वो रह जाएगा. एंड देयर इज अ थ्योरम और देयर इज अ रिजल्ट दैट विल help you to say about the convergence. But when we are going to talk about the series, then always the telescope will not work. हमेशा टेलीस्कोपिंग से
काम नहीं चलेगा ना, कुछ खास तरह के सीरीज। एंड मोस्टली द क्वेश्चंस आस्क्ड इन NBHM, MSc, ओके, मेनी क्वेश्चंस ऑन टेलीस्कोपिंग सीरीज वेयर आस्क्ड, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए टेलीस्कोपिंग सीरीज पे NBHM MSc के एग्जाम में। NBHM नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स, है ना, स्कॉलरशिप्स देती है MSc के लिए, ठीक है। आज CSIR नेट का जो रिजल्ट है वो भी आउट हुआ है, एंड आई हैड सेंट द रिजल्ट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। अपने टेलीग्राम चैनल पे जो रिजल्ट है उसका मतलब जो कट ऑफ्स है वो हमने सेंड कर दिया है। जो हमारे चैनल का नाम है उसी नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, यस PK मैथ्स पंकज 13, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए हो सकता है कि फैब में हो जाए एग्जाम दीपक जी, मे बी इन द February और जनवरी लास्ट, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो an सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, तो जो एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में समेशन n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी an, इसको हम लोग कहते हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसके कन्वर्जेंस की बात करेंगे, और कन्वर्जेंस की जो बात होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी। सबसे पहले तो जो टेलीस्कोपिंग से जिसका काम हो जाएगा, ओके, टेलीस्कोपिंग सीरीज का यूज करके, तो टेलीस्कोपिंग से उसके कन्वर्जेंस देख लेंगे। देयर आफ्टर व्हेन द टेलीस्कोपिंग मेथड फेल, देन व्हाट वी नीड टू डू, देन इन दैट केस वी विल यूज सम जनरल आइडियाज। फिर हम लोग कुछ जनरल आइडियाज का यूज करके उसके कन्वर्जेंस को देखने की कोशिश करेंगे, और जब जनरल आइडियाज भी फेल कर जाएगा, देयर आफ्टर वी विल गो वन बाय वन, है ना। यहां पे श्रीनिवास साहू जी, यू आर वेलकम, एंड श्रीनिवास जी आई वुड लाइक टू से यू हैव ट्राइड वेरी वेल, है ना, जस्ट फ्यू मार्क्स अवे फ्रॉम द सिलेक्शन, सो यू डोंट नीड टू वरी, सर्टेनली इन द नेक्स्ट टाइम यू विल बी एबल टू सेलेक्ट, है ना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है श्रीनिवास जी, है ना। बमुश्किल 10 मार्क्स पीछे रहे होंगे आप, है ना, तो कोई बात नहीं है ना। आप बहुत नज़दीक हैं, और क्या कहते हैं, इस नज़दीकी से जो है पीछे नहीं हटना है ना, बस एक पग की दूरी है उसे तय कर लेना है। प्रभाकर राव जी, यू आर वेलकम। श्रीनिवास जी, सर्टेनली यू विल क्रैक in the upcoming CSIR net exam for sure. And Prabhakar Rao ji, yesterday I had discussed your doubt, है ना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके डाउट्स डिस्कस कर दिए थे, है ना। इफ यू हैड वॉच्ड लास्ट इन द लास्ट ऑफ आफ्टर द डिस्कशन ऑफ TIFR क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस्ड your doubt as well by taking your name, so certainly you should watch that. Okay, so yes, the series will be like this. Okay, people will say, oh, I know all these things, मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ। हाँ भाई जानते हैं, लेकिन अब बताइए सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि हम कुछ सीधे मतलब जो है बड़े बड़े सवाल ले ले। अरे भाई एक से एक सवाल लेंगे NBHM MSc के, ठीक है, एक से एक सवाल, और सब जो है टेलीस्कोप से आप उसके कन्वर्जेंस को देख सकते हैं। बट टेलीस्कोप नॉट ऑलवेज वर्क्स, and in that case you have to use some general ideas as well, है ना। टेलीस्कोपिंग सीरीज हमेशा काम नहीं करेगा, लेकिन बहुत बार काम करेगा, और अगर आपका जो टेलीस्कोपिंग सीरीज है वो काम करता है तो उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार जब आप टेलीस्कोपिंग सीरीज का यूज नहीं करोगे तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये कन्वर्जेंस किस आइडिया से है, किस दिमाग से है। जलद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, यू आर वेलकम। सो नाउ दिस इज द थिंग, दिस इज द व्हाट सीरीज, आई मीन टू से व्हेन यू हैव एन इनफाइनाइट सीक्वेंस and you are going to add all the terms, then you are going to get a series. And when you used to get a series, then we have to decide, we have to say whether this series is convergent or this series is divergent. तब हमें कहना होगा कि यह जो सीरीज है यह सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। कैसे कहेंगे? हाउ शैल वी से? तो जब भी आप कहीं पे देखेंगे ना, जैसे आपको एक सीरीज दे दिया,
ये तो कहेगा नहीं कि आप टेलीस्कोपिंग का यूज कर लो, दे विल नॉट टेल यू दैट यूज द टेलीस्कोपिंग सीरीज, बट बाय जस्ट सीइंग द सीरीज you have to decide how we have to think. I mean to say, what is the thinking process? मतलब थिंकिंग प्रोसेस क्या है? किसी सीरीज को देखा, सबसे पहले क्या दिमाग में स्ट्राइक करेगा? What is the point that should strike at first? So I would like to say that certainly yes, sequence of partial sum will come in your mind. एक एक करके लिखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उसके बाद वीरेंद्र सहवाग की तरह खेलेंगे. सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है ना, पार्शियल सम्स का एक सीक्वेंस बनाना होगा, है ना. और वह जो सीक्वेंस, देखिए पार्शियल सम कहने का क्या मतलब है? वी हैव टू टेक फ्यू टर्म्स फ्रॉम द सीरीज एंड देन वी हैव टू मेक अ सीक्वेंस and the nature of the sequence will say about the series, है ना. जैसे मान लीजिए शरबत बना हुआ है, अब वो कितना मीठा है, क्या करते हैं कि थोड़ा सा सैंपल लेके चख लेते हैं और फिर बता देते हैं कि और अधिक चीनी डाला जाए या ना डाला जाए. तो पहला जो बात आता है वो ये आता है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मींस उसमें से कुछ टर्म्स निकालो और उसके सम से एक सीक्वेंस बनाओ. अब देखिए, अब कुछ टर्म आप निकालिएगा और उसका जो सम आप कब निकाल पाएंगे? जब वो वेल रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न में होगा, जैसे कि एपी में, जीपी में, एचपी में, जो कि हम लोग 11th-12th में पढ़ते हैं. तब ना आप एसएन निकाल लीजिएगा, एक सीक्वेंस का वो पैटर्न निकाल लीजिएगा और आप कहिएगा कि देखो भाई, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है. ठीक है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज, इसका कोरस्पॉन्डिंग सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा, तब आप ये बात कहेंगे. अब मान लीजिए कि सीक्वेंस के लिए आपने कुछ टर्म्स निकाले और उसके बाद वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न में बैठ ही नहीं रहा है, तब ठीक है. तो फिर इसीलिए देखिए, शुरुआती काम तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से ही होता है, लेकिन हमेशा यह भी काम नहीं करेगा. ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको एक पूरा सीक्वेंस बताऊंगा कि क्या थिंकिंग प्रोसेस है कन्वर्जेंस के लिए. What is the thinking process for the convergence of the series? First of all, the thing is you have to think about the sequence of partial sum. I mean to say, when you will see that let summation an be a series of real numbers. ठीक है, be a series of real numbers. Summation an मान लीजिए ये सीरीज है रियल नंबर्स का. ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैसे लिखेंगे? आपका जो एसएन है वो क्या है? वो है a1 प्लस a2 एंड बाय डूइंग सो प्लस an. दिस इज योर एसएन. ऑल राइट, दिस इज योर एसएन. वेयर अगर आप s1 की बात करोगे तो a1 आ जाएगा, s2 की बात करोगे तो इसके दो टर्म्स आ जाएंगे a1 प्लस a2, और s3 की बात करोगे तो सम ऑफ 3 टर्म्स. यस, ओके, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी. तो आपका जो सीक्वेंस है एसएन, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, कैसे बनेगा भाई? वो बनता है ऐसे, s1 यानी कि फर्स्ट टर्म, s2 यानी कि पहले दो टर्म्स का सम, s3 यानी कि पहले 3 टर्म्स का सम, एंड बाय डूइंग सो एसएन. ओके, सो दिस इज योर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम. This is your sequence of partial sum. This Sn is called the sequence of partial sum. इस Sn को हम लोग sequence of partial sum कहते हैं. ठीक है, and the nature of the series depends on it. Same, the nature of series and the nature of sequence of partial sum is same. Nature of series and the nature of sequence of partial sum are same. That's why I had written if and only if. I mean to say, जल्द ही हम क्वेश्चन पे आने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि कहानी पूरे अच्छे से समझ में आनी चाहिए. ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैसे बनाया आपने? इसी के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करके, एसएन.
और यह जो सीक्वेंस, इफ दिस सीक्वेंस विल कन्वर्ज then the series will converge. If this sequence will diverge, then the series will diverge. So what the things we are going to say over here, that summation an converges to L if and only if this sequence Sn also converges to L. Okay, I mean to say what, in a symbolic manner, that if summation an converges to L if and only if the sequence of partial sum Sn also converges to L. In other way, you can say what, if your summation an is divergent, then if and only if this sequence of partial sum also diverges to infinity. If the series diverges to minus infinity if and only if the sequence diverges to minus infinity. This is how we used to decide the facts. Okay, but you will say that how can we say about the sequence? Sequence जो है वो convergent है या divergent है कि नहीं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अब यहां पे ये जो सीक्वेंस है, ये तो कुछ खास तरह के सीक्वेंस के लिए ही आप बता सकते हैं कि उसका नेचर क्या है, अगर वो वेल रिकॉग्नाइज्ड है. ठीक है, अगर Sn ऐसा आया कि आप कोई पैटर्न ही नहीं पकड़ पा रहे हो, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है. तो अब यहां पे मैं क्लियर कट यहां पे बातें बताना चाहूंगा, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, है ना, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. अब आ रहे हैं, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, है ना, कैसे सीरीज के सम को निकालें. पहला तरीका क्या है, टेलीस्कोपिंग सीरीज. ठीक है, टेलीस्कोपिंग सीरीज. अब आप कहोगे टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या होता है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि व्हाट आर टेलीस्कोप, है ना. टेलीस्कोप को आप स्ट्रेच करोगे तो फैल जाता है, श्रिंक करोगे तो वो छोटा हो जाएगा, है ना, और उससे आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके दूर के चीजों को देखते हो. यहां पे भी इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस को देखना है तो टेलीस्कोप का यूज करेंगे. ठीक है, बट आई वुड लाइक टू से मेनी क्वेश्चंस ऑफ NBHM MSc can be discussed with the help of the telescope, but not every question can be solved by using this, but most of the question. So first of all, I will discuss what is telescoping series actually, and thereafter we'll discuss each and everything. So let an be a sequence of real number, ठीक है, an आपका क्या है, sequence of रियल नंबर्स है. देन द सीरीज ऑफ द फॉर्म, अब देखिए, देन द सीरीज ऑफ द फॉर्म, एक खास तरह के फॉर्म में अगर आप सीरीज को ला सकते हो, जैसे समेशन an+1 माइनस an, तो आपका काम हो जाएगा. ठीक है, किस फॉर्म में लाना है, समेशन an+1 माइनस an इज सेड टू बी अ टेलीस्कोपिंग सीरीज. ये कैसे आएगा, टेलीस्कोपिंग सीरीज corresponding to an, ठीक है. if you are able to make that series into this form, summation an+1 minus an, that's why I have said that you will not be able to solve all the questions by telescoping series, but you can solve many questions by using this method. Okay, mostly the questions in which you are able to make the series into this form, summation an+1 minus an, तब हम उसे टेलीस्कोपिंग सीरीज कहेंगे इस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग. और जो रिजल्ट है वो क्या है, वो मैं अब यहां पे बता रहा हूं. ठीक है, और उस रिजल्ट का थोड़ा सा प्रूफ करवाएंगे बस कुछ सेकेंड्स के अंदर. ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू होगा. रिजल्ट क्या है, द टेलीस्कोपिंग सीरीज, रिजल्ट क्या है पहले वो देखिए. द टेलीस्कोपिंग सीरीज समेशन an+1 माइनस an
इज कन्वर्जेंट, ठीक है, ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा कब, इफ एंड ओनली इफ द सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, द सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, सिर्फ और सिर्फ तब जब सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट होगा, एंड और क्या, तो समेशन ए एन प्लस वन माइनस ए एन ये किसके बराबर होगा, तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन माइनस ए वन के बराबर। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इफ यू आर गिवन अ सीरीज, ओके दीपक कुमार सिंह जी आप कह रहे हैं सर आपका अनअकैडमी पर मेरोमॉर्फिक का रिकॉर्डेड लेक्चर देखा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थैंक यू सर, सो दैट्स ग्रेट, ठीक है, मेरोमॉर्फिक पे आपको क्लियर हो गया तो ये खुशी की बात है ना। द टेलीस्कोपिंग सीरीज समेशन ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ द सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट एंड समेशन ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन माइनस वन ए वन, ठीक है। तो अब देखिए अगर कोई भी सीरीज है आपके पास और अगर आप उसको इस फॉर्म में लिख लिए हैं, ठीक है, तो वहां से आपको ए एन मिल जाएगा, और जो आपको ए एन मिला तो उससे आप क्या करोगे, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन माइनस ए वन कर लोगे, ठीक है। तो ये जो आपको लिमिट मिलेगा ना, यह लिमिट ही आपका क्या हो जाएगा, इस सीरीज का सम हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ अगर आप कहोगे तो मैं डेफिनेटली यहां पे डिस्कस कर सकता हूं, ठीक है। इसका अगर आप प्रूफ कहोगे तो आप ये देखो, जैसे अगर मैं S1 की बात करूं, ठीक है, S1 यानी कि इसका फर्स्ट टर्म, तो ये डेफिनेटली A2 माइनस A1 होगा, ठीक है। अगर आप S2 की बात करोगे तो S2 आपका क्या हो जाएगा, S2 आपका क्या होगा बोलिए, A2 माइनस A1 एंड प्लस A3 माइनस A2, ठीक है। ये भी देखिए कटकुटा के क्या A3 माइनस A1 आ रहा है कि नहीं, बोलिए जोर से एक बार। तो इसी तरीके से अगर आप सारा काम करोगे, जैसे S2 A3 माइनस A1 आ गया, ठीक है, आपका S1 A2 माइनस A1 आ गया, तो जो आपका SN होगा, ठीक है, SN प्रभाकर राव जी, SN इट विल बिकम AN प्लस वन माइनस A1, ठीक है, हर एक में से A1 ही जाएगा, ठीक है। S3 अगर आप ले लेते ना तो S3 आ जाता A2 माइनस A1 प्लस A3 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A3, समझे। तो S3 बराबर आपका आ जाता A4 माइनस A1 एंड SN क्या हो जाएगा, SN इज इक्वल टू AN प्लस वन माइनस A1, बिकॉज व्हाट इज द पैटर्न ओवर हेयर, इफ हेयर इज वन देन हेयर इज टू, ओके, इफ हेयर इज टू देन हेयर इज थ्री, इफ हेयर इज n then one more than that, n plus 1 is there. So this is the pattern, right? So now what the thing is going to happen, therefore limit n tends to infinity, limit n tends to infinity Sn exists if and only if limit n tends to infinity An exists, okay? तो यहां से क्या देखते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी Sn एग्जिस्ट करेगा कब, सिर्फ और सिर्फ तब जब लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी An एग्जिस्ट करेगा। और अब अगर कोई आपसे एक शब्द पूछ ले कि भाई, ओके, अगर वो पूछ ले कि लिमिट्स एंड समेशन An प्लस वन माइनस An, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी Sn। और एक बात बताइए, अगर An प्लस वन किसी पर्टिकुलर नंबर पे कन्वर्ज करेगा तो An भी वहीं पे कन्वर्ज करेगा कि नहीं। तो सिंपलिसिटी के लिए हम यहां पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी An माइनस A1 लिख देते हैं, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी An प्लस वन और An एक ही जगह पे कन्वर्ज करेगा। सो टू मेक द थिंग्स सिंपलर वी आर गोइंग टू राइट दिस एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। Now are you ready for the first question that has been asked in NBHM MSc? Is this clear? Is this fine? Because now we are ready to play the game of questions. Yes, it is about to start. The game of questions is about to start. The very first question is coming from NBHM MSc. Are you people ready for that? Are you people ready for that? Yes or no?
Yes or no? The very first question is about to come on the screen. You must have to remember that if you are able to write a series into this form, summation an plus 1 minus an, अगर आप किसी भी सीरीज को इस फॉर्म में लिखने के लिए तैयार हैं या फिर आप इस फॉर्म में लिख पाते हैं, if you are able to write a series into this form, then this sum will be equals to limit n tends to infinity an minus a1. All right? Yes. So now let's go to start the question on it. So first thing is what? Yes. The sum of summation n from 1 to infinity to n plus 1 over n square into n plus 1 whole square. What would you like to say about it? What will be the sum over here? Option A is 0, option B is 1, option C is minus 1, and option D is 2. What would you like to say? First of all, you must have to write this series into the form of an plus 1 minus an. सर्वप्रथम आपको इस सीरीज को an plus 1 minus an के फॉर्म में लिखना होगा. Okay, you must have to write summation n from 1 to infinity to n plus 1 over n square into n plus 1 whole square. What would you like to say about it? I'm waiting for your answers. Come on. I am waiting for your answer. Come on, guys. नहीं आ रहा है समझ में, पहला ही क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा हिंट देते हैं. समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है टू n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है. यस, दिस इज द थिंग. यस. सो फ्रॉम हेयर व्हाट द थिंग इज गोइंग टू हैपन. समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी 1 बाय n स्क्वायर and minus 1 by n plus 1 का whole square. Okay, so this is the thing. But is it in that form? Is it in telescoping series? No, because for that it should be summation n from 1 से infinity an plus 1 minus an. So it will become 1 over n plus 1 का whole square and minus 1 by n square. Right? So this is the thing. So this is actually in the form, है ना. ये अब आ गया ना टेलीस्कोपिंग सीरीज के फॉर्म में. इसमें an क्या होगा, जल्दी से बोलिए. व्हाट इज योर an? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हाउ वी हैव रिटन इट, क्योंकि ये जो है आसानी से ऐसे तो यहां पे यू कैन सी व्हाट 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n plus 1 का whole square. So to balance that we have written minus 1 over there. To balance it we have written minus 1 over there. Okay, क्योंकि ये आ जाएगा n plus 1 का whole square minus n square. ठीक है. तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहां पे माइनस साइन ले लिया है. सॉरी, ये तो ठीक है, ये तो वेल बैलेंस्ड है, लेकिन यहां पे an प्लस 1 माइनस an लाने के लिए हमने माइनस जो है यहां पे बाहर ले लिया है. वी हैव टेकन दिस माइनस आउटसाइड टू मेक इट इनटू द फॉर्म ऑफ समेशन n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी an प्लस 1 माइनस an. ओके, सो फ्रॉम हेयर व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? सो योर an इज व्हाट 1 बाय n स्क्वायर.
your an is what? 1 by n square. Okay, 1 by n square is what? Your an. And therefore what can we say? Limit n tends to infinity, Sn is equals to what? Limit n tends to infinity an minus a1. Okay, so from here what the thing is going to happen? Limit n tends to infinity 1 by n square and minus a1. So an is 1 by n square, so a1 will be what? 1 by 1 square is equals to 1. So this will be the thing. And you can see what? This is nothing but minus 1, because this will go to 0 as n tends to infinity. So this is minus 1, isn't it? And here you can see what? 1 minus 1 was already there, so it will become minus of minus 1. So this is 1. So your final answer is 1, what Jalaj is saying. So that's why B is the right answer. Is this clear? Is this fine? Is this clear? Is this fine? Are you ready for the next question? क्या ये चीजें क्लियर हो गई हैं? Is everything fine? Come on. Aman ji and everyone, if you people are there, then please do some comments. Prabhakar Rao ji, Rajiv ji, for you I am talking in English. If you people are there, then please let me know so that we can ask the next question right here. Okay. So now the next question is what? The sum of summation n from 1 to infinity n over 2n minus 1 whole square into 2n plus 1 whole square. Okay, so what will be the sum? Option A is 1 over 4, option B is 1 over 8, option C is 1 over 10, option D is 1 over 12. Alright, so the sum of this sigma n from 1 से infinity n over 2n minus 1 whole square into 2n plus 1 whole square. So what would you like to say? You have to make it into the form of telescoping series, and thereafter you just need to use the result. Limit n tends to infinity Sn. Okay, you just need to use this result, but before that you have to make that into the form of summation an plus 1 minus an. Alright, so yes, this is the question right here. You should try your level best to give the right answer, and thereafter we'll discuss everything in a proper way. एक कोशिश यहाँ पे जो है बनती है आप सबके माध्यम से, और उस कोशिश में कितनी शक्ति है वो आपके सही जवाब से ही पता चलेगा. Come on, I just want to see the answer from your side. Come on guys. Jalaj is there with the answer, but what other people says? Jalaj जी यहाँ पे एक आंसर के साथ उपस्थित हो चुके हैं.
लेकिन बाकी के लोग क्या कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। दीपक जी इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, ठीक है। सो लेट्स गो टू सी हाउ द पीपल आर सेइंग। यस जलद जी, so yes, what can we see over there? Summation n from 1 to infinity is the thing right there, n over 2n minus 1 whole square into 2n plus 1 whole square, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। and from here what can we see? Summation n from 1 से infinity, okay, it will become 1 over 2n minus 1 का whole square and minus 1 over 2n plus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यस, एंड इट विल बिकम व्हाट? 1 over 8। वाई? बिकॉज आप जब यहाँ पे 2n plus 1 का होल स्क्वायर करोगे और यहाँ पे माइनस साइन है, इधर 2n minus 1 का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो न्यूमरेटर में 8n आएगा, जबकि अपने पास यहाँ पे क्या है? ओनली n है। तो ऊपर में जो 8n आएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए 8 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस फाइन? क्या ये चीजें क्लियर हुई? 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि अब यहाँ पे आपने n over 2n minus 1 के होल स्क्वायर इंटू 2n plus 1 के होल स्क्वायर को ये चीजें लिखी है। अब इसको सॉल्व करोगे तो इस दोनों का एलसीएम ये आएगा, और 2n plus 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2n minus 1 का होल स्क्वायर, वो चीज़ें जब आप करोगे तो इन दैट केस क्या होने वाला है कि आपका वो जो है 8n ऊपर में आ रहा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ n है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/8 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। आफ्टर दैट व्हाट द थिंग्स वी आर गोइंग टू डू? इट विल बिकम -1 over 8 समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/2n plus 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1/2n minus 1 का होल स्क्वायर। क्यों? वाई? बिकॉज वाई दिस इज गोइंग टू हैपन? बिकॉज वाई दिस इज गोइंग टू हैपन? बिकॉज वी एक्चुअली नीड द फॉर्म ऑफ समेशन an plus 1 and here is what? an. Here is what? an. Okay, so it will become what? -1 over 8. Okay, summation an plus 1 minus an is the thing right there. So it will become what? Limit n tends to infinity, an minus a1. Okay, it will become -1/8 limit n tends to infinity an minus a1. So from here it will become -1/8 into limit n tends to infinity an. Okay, so limit n tends to infinity an will be what? 0, and a1 is what? a1 क्या है? तो a1 n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 minus 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका a1 बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो a1 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका -1/8 इंटू -1 यानी कि 1/8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? इज दिस फाइन? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? कम ऑन गाइज। प्रभाकर जी, जलद जी, दीपक जी, राजीव जी, इज दिस क्लियर? एवरीवन प्लीज लेट मी नो, इज इट फाइन? इज इट क्लियर? राजन, Deepak ji, Srinivas ji, everyone. I hope this is clear. So now let's go for the next question. Let's go for the next question. Okay, this is also a question on telescoping series. So you have to say about the summation n from 1 से infinity 1/4n square minus 1. Yes, this is interesting. This is a bit interesting, isn't it? So what would you like to say about its sum? Really interesting. 1/2 or 1/4 or 1/8 or 1. What would you like to say? समेशन n from 1 से इन्फिनिटी 1/4n स्क्वायर माइनस 1 है। क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे लाएंगे टेलीस्कोपिंग सीरीज पे?
कैसे यूज करेंगे टेलीस्कोप का? व्हाट वुड यू लाइक टू से? हाउ शैल यू मेक इट समेशन n from 1 से infinity an plus 1 minus an, and thereafter you will be able to say the facts. This time Jalaj ji is very quick. Jalaj ji is very quick this time, but what other people says will be really interesting to see. Come on, guys. Come on, Prabhakar ji. Oh, Prabhakar ji is also saying the same thing. But what other people says? Come on, Rajiv ji. Deepak ji. Srinivas ji, I think you had already done all these. That's why you might not be there. But this is really interesting to make it, and this time Rajiv Gandhi has also come up. Okay, so now one can see it easily that this is what? Summation n from 1 to infinity, and 1 over 4n square can be written as 2n ka whole square and minus 1. Okay, so this will become what? This will become what? Summation n from 1 to infinity 1 over 2n minus 1 into 2n plus 1. Okay, yes, this is the thing. All right, yes. So from here what can we see? We can see what? We can see what? Yes, 1 over 2. Why are we writing 1 over 2? I will tell you for sure. 1 over 2n minus 1 and minus 1 over 2n plus 1. Okay, so yes, this is the thing. Okay, so now I would like to say कि why I am writing 2 over here, क्योंकि इसको फिर से जब आप बैलेंस करोगे ना 1 by 2n minus 1, 1 by 2n plus 1, it's LCM. फिर इधर से आएगा 2n plus 1 and minus 2n and minus minus 1. तो in the numerator you will get an extra 2. यहाँ पे 1 ही है ना, लेकिन जब आप इसको subtract करोगे, मैनेज करोगे, then in that case you are going to get 2 in the top, है ना. आपको 2 जो है यहाँ पे numerator में मिल जाएगा. So to make the balance, है ना, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 by 2. Okay, so it will become 1 by 2. But you have to make one more thing. You have to make summation an plus 1 minus an, and that's why it will become what? Minus 1 by 2, limit n tends to infinity, an will be there, so 1 by 2 n minus 1 will be there. Isn't it clear? Isn't it fine? Yes. Yes. So from there what the thing is going to happen? And minus what the thing will be there? A1. So A1 is what? 1. So once again this will go to 0 and you will be left with this minus 1, and minus 1 by 2 is already there. So it will become minus 1 by 2 into minus 1. So it will become plus 1 by 2. तो ये क्या हो जाएगा? Plus 1 by 2 हो जाएगा. Is this clear? Is this fine? Are you ready for the next one? क्या आप सब अगले सवाल के लिए तैयार हैं? Yes or no? Are you ready for the next question? All right. So now let's take the next question. Yes, you have to find the sum of the series summation n from 1 to infinity n minus under root n square minus 1 over under root n into n plus 1. Okay, so you have to say about the sum of this series. So what would you like to say? Is it 1 or 2
or 3 or 4? So you have 4 options right here. Summation n from 1 to infinity n minus under root n square minus 1 over under root n into n plus 1. So what would you like to say about it? Are you able to make it into the telescoping series? Are you able to find your an? And is it easy to say about its sum? If yes, then please let me know the answer. Come on guys, I am waiting for your answer. I am waiting for your response. Yes, you just need to see that how can you write, isn't it? How could you write summation n from 1 to infinity an plus 1? How shall you write your an plus 1? Could we write this one? Under root n minus 1 over under root n. Yes. So certainly you can take the LCM and it is well balanced, isn't it? Well balanced. Agreed? LCM लेकर के देखो, ये देख रहे हो अंडर रूट n into अंडर रूट n and minus under root n plus 1 into under root n minus 1 under root n square minus 1. And then in the denominator, you are going to enjoy under root n into n plus 1. Isn't it clear? Isn't it fine? So in that case, what are the things you are going to see? Oh, this is our an. Yes, this is our an. And now people will not hesitate to say that it will be nothing but limit n tends to infinity an minus a1. Okay. So this is your an. If you will put n is equals to 1, then you will get a1, isn't it? And a1 is 0. Because 1 minus 1 divided by 1 will be 0. So a1 is 0, right? So from here it will become limit n tends to infinity. An will be what? Under root n minus 1 over n and minus 0. Okay. So from here what can we see? We can see this is nothing but limit n tends to infinity square root 1 minus 1 by n minus 0. So this will go to 0 for sure. And finally you are going to get your 1 as the required sum of the telescoping series. Is this fine? Is it clear? Just after recognizing the fact, we have written it into the form of summation an plus 1 minus an. And it is certainly equals to limit n tends to infinity an minus a1, and it will become limit n tends to infinity under root n minus 1 over n minus 0. Okay, so finally we are going to get 1. Is it fine? Is it clear? Yes or no? If this is clear, then are you ready for the next one? Okay, are you ready for the next one? Some more telescoping series. Okay, Rajiv ji. So the next question is what? Yes, you have to find the summation n from 1 to infinity 1 over n plus 1 into n plus 2. What would you like to say about its sum? Option A is 1. Option B is 1 by 2. Option C is 1 by 3. And option D is 1 by 4. You have 4 options right here and you have to say the right thing.
Okay, you just need to make it into the telescoping form, summation an plus 1 minus an, and thereafter you can easily use the limit formula to get your answer. Summation n from 1 to infinity 1 over n plus 1 into n plus 2. Okay, Kishle ji, there is no need to worry. Your semester exam is there. That's why you are not coming in the live class. But it's okay, Kishle. No need to worry. I can understand your problem because he is messaging me on WhatsApp. So that's why. Jalaj ji is there with the answer. And this time Srinivas Sahu is saying the same the things. But Jalaj ji is saying something different this time. Jalaj is saying something different. So I would like to say, Jalaj, please revise your answer if possible. Please revise your answer if possible. Summation n from 1 to infinity 1 over n plus 1 into n plus 2 is there. Okay. So yes, we can rewrite it as how? Summation n from 1 to infinity 1 over n plus 1 minus 1 over n plus 2. And we can certainly take the negative sign out and it will become summation n from 1 to infinity 1 over n plus 2 minus 1 over n plus 1. Yes, this is the thing. So from there, what can we say? What is our an? Certainly this is our an. Yes. And it will be what? Our an plus 1. Now we are not hesitating to say that this is nothing but minus of limit n tends to infinity an minus a1. And what is your a1? Certainly your an is what? 1 over n plus 1. So your a1 will be what? 1 over 2. Okay. So yes, this is the thing. So this will be what? Minus limit n tends to infinity an. Okay. So what will be your an? Certainly 1 over n plus 1 and minus what is your a1? Your a1 is 1 by 2. Okay. So this will become what? Certainly this will go to 0 and minus of minus 1 by 2. So certainly this is plus 1 by 2. So this is your answer. Is this clear? Is this fine? Are you ready for the next one? And I am going to formalize it. हम इसको भी एक फॉर्मूला बना देंगे. ठीक है, जैसे आप यहां पे देख रहे हो, यू कैन सी व्हाट द थिंग इज देयर 1 over n plus 1 into n plus 2. So if the things will be 1 over n plus 1 into n plus 2 into n plus 3, then what will be your answer? If it will become 1 over n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 into n plus 4, then what will be your answer? So yes, these are the questions that are possible. Okay. So now I am going to ask one very interesting thing, that think if you are given summation n from 1 to infinity 1 over n into n plus 1 into n plus 2, अगर ये है तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? What will be your answer in this regard? 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6 and 1 by 8. So you have 4 options right here. Okay. You have 4 options right here. What would you like to say about it? Summation n from 1 से infinity 1 over n into n plus 1 into n plus 2. इसका आंसर क्या होगा? कैसे डिसाइड करेंगे? क्या कोई फॉर्मूला है? ठीक है, हाँ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को भी डेराइव करेंगे. इसके बाद वाला क्वेश्चन वो फॉर्मूला ही है जिससे कि इसको देखते ही आप तुरंत आंसर बोल सकते हो. ठीक है, यू कैन से द आंसर वेरी क्विकली. आप यहां पे देखोगे ना, यू आर गोइंग टू स्टॉप हेयर एट 2. ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये सीधा हो जाएगा 1 by 2 into 2 फैक्टोरियल, यानी कि 1 by 4. ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया? हाउ दिस फॉर्मूला हैज कम? सर्टेनली I am just going to discuss that. So first of all, you will write it as how? Summation n from 1 to infinity 1 over n into n plus 1 minus
1 over n plus 1 into n plus 2. Yes, you can write like this. And after this, what the thing is going to happen? You have to balance it. इसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो आप जब इस दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो यू विल फाइंड कि n प्लस 2 यहां पे रखना पड़ेगा, ठीक है, और n यहां पे रखना पड़ेगा, तो 2 इफेक्टिव हो जाएगा ऊपर. तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा. बट यहां पे क्या है? an माइनस an प्लस 1 है. सो बट वी नीड द टेलीस्कोपिंग फॉर्म. सो -1/2 समेशन n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी. ये हो जाएगा an प्लस 1 माइनस an, यानी कि an प्लस 1 के जगह पे 1 ओवर n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 एंड माइनस 1 ओवर n इंटू n प्लस 1. ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी. Thereafter, what the thing is going to happen? Are you people agree with this or not? And this time you will not hesitate to say that this is your an. Okay, and if this is your an, then it will become -1/2. Limit n tends to infinity. An minus a1. Okay, so what will be your a1? Certainly this is 1 over 1 into 2. So 1 over 2 will be your a1. And -1/2. Yes, limit n tends to infinity. An is what? An is what? 1 over n into n plus 1. And minus, what the thing is there? 1/2. That's great. And now you will not hesitate to say that this is going to 0. And -1/2 minus 1/2 will give you 1/4. So yes, 1/4 is your answer. But what was the short trick? I have told you that if this is 2, then 1 over 2 into factorial 2 will be your answer. Before this, is it works? Yes, this is 1. Okay, so what the thing will be there? What the thing will be there in that case? a1 is what? 1/2 है ना. तो अब यहां पे 1/2 इंटू फैक्टोरियल 2, 1/m इंटू फैक्टोरियल m. Okay, so now I am going to ask one more result and then you will be able to see the things. The question is summation n from, यही जो है फॉर्मूला बन जाएगा, summation n from 1 से infinity 1/n into n plus 1 into n plus 2 and by doing so ये चला जाएगा n plus m तक. अब इसके सम के बारे में अगर आपसे कोई पूछे what will be its sum, then what would you like to say about it? 1/m into factorial m, m into factorial m, आपको हिंट मिल चुका है, m square or none. You have 4 options right here. Come on. ठीक है, how can you write it into the telescoping series is really interesting to see. Summation n from 1 से infinity 1 over n into n plus 1 into n plus 2 and by doing so n plus m. Okay, so what will be the way? राजीव जी, एब्सोल्युटली. देखिए तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप इसे लिख सकते हो 1/m समेशन n from 1 से infinity 1/n into n plus 1 into n plus 2 and by doing in the same manner n plus m minus 1. ठीक है, एंड माइनस ये हो जाएगा क्या, 1 over n into n plus 1 into n plus 2 and by doing so n plus m. Okay, so yes, this is the thing. Okay, yes, so from here what can we see? अब आप कहोगे कि भाई ये आपने लिखा क्या है. मैं बोलूंगा एक काम कीजिए, you should take the LCM of this and this. ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि यहां पे n plus m है, इसमें नहीं है. ठीक है, तो यहां पे n plus m हो जाएगा. ठीक है, और इधर से आपको क्या मिल जाएगा, n. ठीक है, तो आपको इफेक्टिव चीजें क्या आ जाएगी, m. तो उस m के लिए ये क्या हो जाएगा, 1/m से डिवाइड कर देंगे, तो वो चीजें जो है बैलेंस हो जाएगा, दैट विल बी बैलेंस्ड. सो दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड विथ m एंड नाउ द गिवन थिंग इज वेल बैलेंस्ड ओवर हेयर.
अब आपका जो है ये क्या बन जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा -1/m। क्यों? क्योंकि हम यहां पे क्या करने वाले हैं, अब इतने बड़े टर्म को बार बार लिखने से अच्छा है कि यहां पे प्लस कर देते हैं, यहां पे माइनस कर देते हैं और यहां पे माइनस कर देते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा, समेशन ये आपका an+1 एंड -an, तो ये आपका an यहां पे रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से वी कैन डू व्हाट, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an एंड -a1 कर देंगे। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू गेट, ये हो जाएगा आपका -1/m और an अगर n टेंस टू इंफिनिटी, n को अगर इंफिनिटी पे भेज देंगे तो ये तो 0 पे चला जाएगा और यहां पे एक माइनस रहेगा। और a1 कहने का क्या मतलब है कि यहां पे वी आर गोइंग टू टेक व्हाट, n बराबर 1, सो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम व्हाट, -1/1 × 2 × 3 एंड बाय डूइंग सो m। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/m एंड दिस इज व्हाट, फैक्टोरियल m। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड यस, वन मोर माइनस वाज देयर, है ना, एक माइनस यहां पे भी था, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/m × m का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहां से यही एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 1/n × n+1 × n+2 × n+3 पे रुका तो m बराबर 3 हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 1/3 × फैक्टोरियल 3। समझ में आ गई बात? तो ये जो चीज़ें थी आज हमने टेलीस्कोपिंग सीरीज को बड़े खूबसूरती के साथ यहाँ पे जो है डिस्कस करने की कोशिश की। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू आर वेलकम टू स्पीक। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो कृपया कमेंट करें। ठीक है, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से वन थिंग कि अब जो नेक्स्ट क्लास है उसके लिए थोड़ा सा मैं गैप लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपका ट्यूसडे से शुरू होगा। ठीक है, मैं सारा यहाँ पे बात बता देना चाहता हूँ, ट्यूसडे से जो है एकदम कॉन्टिन्यूअस क्लासेस जो हैं वो चलती रहेंगी। कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आई हैव टू यस कुछ क्रिएटिव काम ही है आपके लेक्चर से ही रिलेटेड। ठीक है, हमें टोपोलॉजी, फंक्शनल एनालिसिस, गेट का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमें काम करना है। ठीक है, so that's why, so on Tuesday onwards we will be continued. Okay, and if you have any doubt or any concern then you are welcome to speak and we'll continue from Tuesday again. Okay, yes, I am going to take some gap this weekend. I am busy, so that's why I will not be able to come, but from Tuesday onwards certainly we will come live daily and we will continue this story. Okay, जो कट ऑफ था CSIR नेट का वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी सेंड कर दिया है, वैसे भी आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि मंगल को होगा। ठीक है, ट्यूसडे को होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग CSIR नेट, गेट, NBHM इस सब का प्रिपरेशन करते हैं, आप लोगों से ये निवेदन है कि उन लोगों तक ये लेक्चर सीरीज ज़रूर पहुंचाएं। देखिए, नेक्स्ट CSIR नेट एग्ज़ाम हो सकता है कि मतलब जनवरी या फरवरी में हो, जैसे पिछले साल हुआ था फरवरी में। ठीक है, लेकिन जो भी अपडेट आएगा देन विल से एवरीथिंग जलद जी। ठीक है, एंड प्लीज शेयर दीज सेशंस टू द नीडी who is preparing for IIT JAM, CSIR NET, GATE, NBHM, TIFR, whatsoever. Okay, so we'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Anybody wants to say anything then certainly they are welcome to speak. जलद जी, टेंशन नहीं लेने का है, फरवरी तक तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर कोई भी अपडेट्स आता है, मेरे को पता चलता है, तो मैं निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे चैनल पे बता दूंगा। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।